so that it takes a shape of a case. And we'll, as all the members are here, we'll just see where there is some gap, so how that gap can be filled up. तो पहले हम ग्रुप सी विकास शर्मा वाला ग्रुप ले लेते. इसमें वैभव जोशी ने तो ज्वाइन ही नहीं किया था, तो आपके इसमें अभिषेका सोनी and Sujata. So you can start. What information, where did you go and what information you have with you? Okay, ma'am. Right. So Sujata ji and Abhisheka, can I start? Yeah, surely, sir. Okay. So, ma'am, good afternoon. Good afternoon, everyone. Yesterday, we met the owner of Emerald Pharma. Actually, he's a drug dealer. They buy chemicals and they are into B2B marketing. So, ma'am, actually, they had some challenges in this role. One side, they had challenges for looking for industrial clients. Generally, companies want to give them opportunity, but there are quality controllers who generally do not give them that opportunity to supply them. And one side and another side, when they buy these industrial chemicals, so generally, majorly they are buying from that western part, that is Gujarat and Maharashtra, Mumbai. So they had some problem like transportation costing. They have to suffer, and there are some government restrictions. Some policies are there in terms of when they supply these things to a specific market, like that northern market, Uttarakhand and Himachal Pradesh. So these are the states. They get some relief and exemption from income tax department. So when they supply their chemicals there, so they incur that transportation costing. So generally, there that Himachal Pradesh and Uttarakhand, their clients prefer that nearby suppliers. So these were some of the challenges. However, the person is good at learning also. He said this thing that they should have that technical knowledge in their field, and that is a barrier for new players also to come into the market. So these were the few of the things, and as such, there are so many information which he provided yesterday. What will be the highlights of your case? Ma'am, it will be actually we have not decided yet what will be the highlight of our case, but as far as the information is there, I think it will be around business environment actually. What you said, as you said, that then it needs certain, in terms of some knowledge about the market, and you say that makes difficult for the new players to get into the market. So that is good for them, isn't it? Of course, we can go with this, ma'am. हाँ, लेकिन फिर आप बोल रहे हैं जो challenge, फिर आप बोल रहे हैं कि income tax department they get some leverage. Why no, do actually it is his personal challenges, but as far as the industry is concerned, so this is not an easy market for any new entrants. लेकिन आपको जो भी आप लिखेंगे, अब उसमें जो भी उसने इंफॉर्मेशन दिया है, पर कुछ तो दिमाग में रख के चलेंगे ना आपकी what it is focused at. Then you will be able to put the matter together. को तभी आप systematize कर सकेंगे ना. आप किस पे देखेंगे? The challenges business environment पर करना चाहेंगे. Yes. Okay. What is the business environment like? Yes. Ma'am, I have a question. Like, are they struggling for the functional area of this case? That particular drug dealer. हाँ, मतलब आप इसकी फंक्शनल जो केस का फंक्शनल एरिया है जहाँ पे आप जा करके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाए वहाँ का
I So think function- they, they I are think they are doing on, business environment. The company vis-a-vis the business environment, how they are going to deal with it, isn't it? If I have understood it correctly, Vikas, yes, ma'am. Actually, right? functional environments, they do not have that functional uh, development, functional department actually. He's the main dealer, and all the roles he is performing, he's in the trading actually. They are not manufacturing anything. They are just buying and they are supplying. Though they have some ready products, and sometimes based on the requirement, they buy and then they supply. अभी सर ये चूंकि ड्रग के बिजनेस में तो कोविड से कोई बिजनेस में फर्क पड़ता है क्या इनका? Sir, actually, he said that for a short period of time, the raw material prices increased during that span only. Then later on, it came down. So there is no such major effect on his business. So nothing like the COVID effect in his business. And the positive thing about his business is that it is a demand-driven business. He said this thing. So no financial crisis are there. In fact, that credit 3 or 4 months credit, generally they deal in the both side. They buy on credit for 3 months, and then they, in fact, they do not have to maintain that much inventory. Generally, they manage the 20 days inventory only. So he's not having that capital problem also, that money problem. But the things are like major challenges are from government side. Regulations are also there, and in fact, the government is not doing to promote such kind of drug industry or drug dealers, because that strict norms are there. They have to follow so many regulations for buying and for supplying also. But no promotional role from the government side. In fact, he said that government is also breaking that rule of WTO, that is trade barriers. In fact, government has created trade barrier for them, because for a particular area, this industry is promoted under that specified states or SEZ area. So government is promoting these industries into that area. So as per this information, I think we can go with this business environment. Yes. Yes. ठीक है. Now, Anything okay. else, Abhisheka ji, you want to say? And Sujata, if I am missing anything. Yeah, they have invested 2 to 3 crores every year. And this is company is totally depends on the demand driven company, not a money making. And they have they are the dealers basically. And they are not manufacturing the medicines and all. Rest They are simply trading it, is it? Yes. yes, ma'am. They are traders. Actually, they deal in excipients. Excipients are only 1 to 2% of the actual combination of any drug. But it is very important. So they are more important than the actual drug, the excipients or the active pharma chemicals. So if government supports them properly, then there is a wide scope that they can grow, or they can even subside the imports if they can grow properly. Then the imports can be reduced, or they can perform very well in outer markets. But the government is not paying proper attention to this sector. They are simply busy in this simple matters like what is the area and how the cleaning is being done, but not paying actually attention to what can be done so to promote such business opportunities. All right.
अब आप जैसे लिखने लगेंगे ना तो तब फिर इसका और क्लैरिटी आएगी, पर अभी एज ऑफ नाउ यही लग रहा है कि इसका द एग्जिस्टिंग द चैलेंजेस दे आर फेसिंग अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए the case, So, you can develop the case. Can we go with this opportunities and challenges? This title, can we go opportunities and challenges for Emerald? Opportunities, no, opportunities, challenges, title तो नहीं है, दीजिए title आप बोल देते, मतलब फ्यूचर पाथवेज क्या है इनके, फ्यूचर जो फ्यूचर पाथवेज होगा तो उसमें अपॉर्चुनिटीज भी है, आगे का रास्ता अपॉर्चुनिटीज भी है, बट दैट है ना, अपॉर्चुनिटीज में चैलेंजेस भी है. अब अपॉर्चुनिटीज क्या है, से फॉर एक्सपेंशन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, है ना, बट देन द चैलेंज इज जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस इज दे हैव टू वर्क विद इन दैट फ्रेमवर्क, दे कैन नॉट गो आउटसाइड दैट, सो दैट यू हैव टू, यू कैन मेंशन देयर इन द केस. And one more thing. हाँ जी बताइए. He was telling कि even the big players like Cipla and Ranbaxy, they are having so means a single department and they're performing every function. So framework should be like purchase department should be different, and sales department should be different, marketing department should be different. But even the big players like Cipla and Ranbaxy, they are having a single department. So can we have a direction to this plot? मतलब can we give direction to this? मतलब आप ये बोलेंगे कि भाई उनको ये करना चाहिए, वो तो उसकी एक सजेशन थी, but there are other constraints also where they'll not be able to, you know, bifurcate. वो तो उसने आपसे शेयर किया होगा ना, तो उसको देखते हुए आप बता दीजिए कि उसका पर्सनल सजेशन ये है, पर कहाँ constraint है. अगर उसका सजेशन है, if it is so easy, then why he is not doing it? There must be some constraint because of which he is not doing. ये होना चाहिए. अब सिप्ला और रैनबैक्सी में क्या होना चाहिए वो तो अलग बात है, पर आपके यहाँ क्या होना चाहिए और आप कैसे उसको विजुअलाइज करते हैं, आप उसको कैसे देख रहे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना. ठीक है, अब उसको मेंशन पासिंग रिमार्क तो दे ही सकते हैं कि भैया ही वाज जस्ट थिंकिंग लाइक दिस, एंड देन लीव इट टू द डिस्कशंस, व्हाट डिस्कशंस मेक आउट ऑफ इट. ठीक है. Now this was group C. Now we can move on to group D. Yeah. D is Rachana Jain. Is it? Yes. Yes, ma'am. Rachana Jain, and then we have Megha Pawan, Jain. Pawan, sir. What about Ashok Sitole? He was not there. He's not there. Yesterday was these last 3 persons was not there, madam. They were not there only. We are only two. Ma'am, हाँ, I, Pawan sir and Meghna madam was just 3 persons who were in the discussion with the corporate Vineet sir, and Meghna ma'am but is then today again she is not here, and I called her but she didn't pick my call. So we, Pawan sir and I am here just for the group D. So Manish, you please make note, these people who are not been there, so they are not part of the Sure. so they will not be included because one has to be there from very beginning. Sure. So ये जो अशोक सितोले है जी और मेघना जैन, yesterday she was there, Pawan is there and Rachana is there. ठीक है. Megha is not today there. Yesterday she was there. Yes. She was Yes, there. ma'am, she was. ठीक है. बताइए क्या किया है आपने, मतलब what information you got, बताइए. Madam, yesterday we discussed the Vineet Vyas sir. He is the co-founder of Indore Talk, as well as he is the founder of Chacha Chature. Actually मेरा ना इनपुट चाहिए तो फिर इसलिए मेरे को पूरा सुना बात. हाँ जी बताइए. So he You just discussed. start. I missed it. आप शुरू से शुरू बोले, आप क्या बोलते थे? Actually, yesterday we talked with this co-founder of Indore Talk, that is Mr. Vineet Vyas, and he is the founder of the Chacha Chature also. Okay. So basically, he talked more about his journey from the BTech from SBI TS, and then how he gone into the
teaching, then consultancy, then marketing, then comes into this Indore Talk as a marketing executive, then becomes as a co-founder, and they started a new invention. He also worked as a event manager. So he discussed more detail. He talked about more detail about the journey of himself. And now So what is the Is it situation? a journey of an entrepreneur? Yeah. So he also discussed the Indore Talk as a digital As a- platform, promotional platform. He is a co-founder, and he also discussed the Chacha Chature, that is the this Indori metropolitan cities local digital platform. So for me, it is very difficult how to relate this as a company, because he discussed more about himself, the journey, because from a very backbenchers in his college life, is become a teacher, then he become a consultant, then he changed his whole teachership into a just like a marketing executive, like that. नहीं वो तो ठीक है लेकिन आपने जैसे when he shifted his area from say teaching to he shifted to some other profession, did you ask him that what was the reason of shifting Yes, to yes, वो सारा हमने उनसे लिया था डाटा। जैसे 2000 जो उनके जो जिस पॉइंट पे उन्होंने चीजों को शिफ्ट किया, सो 2005-7 में उन्होंने SVITS इंदौर छोड़ा था, तो एक सब्जेक्ट था ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें वो 6 बार फेल हुए थे। बट 3 जब वो ट्यूशन मतलब जो कोचिंग में जाते थे, तो 3 यूनिट उन्होंने तैयार की थी, वो 3 यूनिट उन्होंने अच्छे से तैयार की, उसमें वो सब्जेक्ट जो पेपर आया था उसमें अच्छे मार्क्स मिले, 78 आउट ऑफ 80। तो उसी सब्जेक्ट में उन्होंने टीचिंग कराना चालू कर दिया। जिस सब्जेक्ट में 6 बार फेल हुए थे, उसी सब्जेक्ट में टीचिंग स्टार्ट किया, तो उनको एक कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि नहीं, मैं पढ़ा सकता हूँ। फिर उसी सब्जेक्ट में 10 साल तक वो पढ़ाते रहे अलग अलग कॉलेजों में। बहुत टाइट शेड्यूल था, सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक उनका शेड्यूल रहता था पढ़ाने का अलग अलग कॉलेजों में। और उसके बाद में एक इंदौर में ही किसी कॉलेज में उनका जो मार्केटिंग स्किल्स है, उन्होंने नाम भी बताया था, AK सिद्दीकी, द हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। सो उन्होंने उसको पहचाना कि योर मार्केटिंग स्किल्स इज गुड, क्योंकि लोग उनको हायर करते थे एडमिशन के लिए कि एक मिनट एडमिशन लेके आओ, आपको 1000 रुपये हम देंगे एट दैट टाइम। सो उन्होंने उनको काउंसलिंग एंड मार्केटिंग में ऐड कर दिया। फिर वो कुछ साल मार्केटिंग में रहे। किसी एक चीज पे ऐसा आया कि भाई किसी दोस्त से बात करते वक्त उनको लगा कि भाई ये क्या कर रहे हो, कि बोले ये इवेंट मैनेजमेंट है, आपके बस की बात नहीं है। सो ही टेक इट इज चैलेंज कि भाई नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। वो डायरेक्ट कॉलेज के अंदर गए, बोले ये उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मुझे दे दो आप, आई विल डू दैट वन। सो उन्होंने उसको किया, और फिर उन्होंने देखा कि इसमें तो कमाई 60% से भी ज्यादा है। मतलब जो उन्होंने बजट बताया था 6-6.5 लाख का, उसमें 60% से ज्यादा उनको कमाई मिली। सो उनका जो मोटो था वो पूरा चेंज हो गया। बोले नहीं, ये पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं, ये इवेंट मैनेजमेंट में जो पैसा है वो कहीं नहीं। सो वो टोटली शिफ्ट हो गए इवेंट मैनेजमेंट में। इवेंट मैनेजमेंट करते करते फिर वो ज्वाइन किए ये जो इंदौर टॉक में। इंदौर टॉक स्टार्ट हुआ जनवरी 2018, और अगस्त 2018 में एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव उन्होंने ज्वाइन किया। बट जनवरी 2019 में वो को-फाउंडर बन गए बिकॉज ऑफ द उनकी जो स्किल्स की वजह से। और उसके बाद उनका जो स्टार्टिंग में उन्होंने वो बताया था कि स्टार्टिंग में हमारा 4,500 रुपये से हमने फर्स्ट सेल स्टार्ट किया था, जो कंपनी का काम किया था। उसके बाद ये जनवरी एंड तक हमारा 1 लाख रुपए पर मंथ के आसपास तक आ गया था। जनवरी जो बिफोर कोविड ये लगभग 1.5-2 लाख के आसपास उनका सेल होता था। कोविड के दौरान भी उनका ये सेल लगभग 1 लाख के आसपास रहा। एंड आफ्टर कोविड इन 2021 ये 2-2.5 लाख 3 लाख तक चला गया। बट नाउ द सिचुएशन इज, और इसी बीच में बिकॉज इंदौर टॉक के अंदर बहुत सारी चीजें इंदौर की बताते हैं, इसी बीच में एक इनके जो विनीत व्यास जी थे, उनके दिमाग में कंसेप्ट आया कि व्हाई नॉट वी स्टार्ट प्रमोटिंग द फूड एक्टिविटीज ऑफ द इंदौर। सो चाचा चटोरों के नाम से उन्होंने उसको एनरोल करवाया, ट्रेड मार्किंग उन्होंने डाल रखा उसके लिए। सो नाउ ही आल्सो फेमस एज ए चाचा चटोरे। सो वो इंदौर में अलग अलग जगह जाते हैं, फिर उसको उस तरह से चार्ज करते हैं। तो उनका इस तरह से ये चीजें समय के साथ चीजें चेंज होती गई, ये उनका ज्यादा था।
अब reason. इसमें आप इसको ये जो है ना उसकी जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर at Hmm. every stage you can see that he has taken everything as a challenge and seen to it that he is able to get it. So इसको आप इसी तरह हाईलाइट करो. पर अब आगे क्या? मैम आगे आई क्या विश टू उसका? सबमिट. हाँ. मैम एक्चुअली उन्होंने अपने पूरे कॉन्वर्सेशन में 5-6 पॉइंट्स सम लाइक some strength are there, like you have to be have faith in your co-founder, you have to grasp every opportunity, you have to take risk, you have to give importance to तो ये जो है ना उसकी ये जो इस केस को आप एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा सकते हैं जैसे ना चटोरे. So basically रचना Voice is something breaking, ma'am. So madam, he discussed more about what are the challenges he's faced, how he grabbed the opportunity so that he become a successful I think entrepreneur. हाँ, तो मुझे लगता है कि ये तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप पर ही जा रहा है केस. Okay. तो आप इसी को कहें. वेट अ मिनट. सो आप उसको उसी तरह डेवलप करेंगे. ma'am, can we add it or can we make it as an analysis, SWOT analysis type, because he has given some strength, some वो तो failure. बाद में होंगे. वो तो SWOT एनालिसिस तो अभी नहीं होगा ना. अभी तो वो बाद की बात. यू आर नॉट एनालाइजिंग हिम, यू आर एनालाइजिंग केस. लेकिन केस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं. एक तो हाँ. पर्सन है, लेकिन वो जिस एनवायरनमेंट में काम करता है वो एनवायरनमेंट में भी तो फिर तो हर कोई एंटरप्रेन्योर ही बनेगा ना. पर वो तो जो है आपका जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है वो आपको कितना सपोर्ट करता है वो भी आपको देखना है. तो थोड़ा बहुत आप उसके बारे में भी बताएं कि हाउ ही इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस बट ही मैनेज. जैसे ये इवेंट मैनेज, जब उसका दिमाग में आया कि इवेंट मैनेजमेंट, पहले तो इवेंट मैनेजमेंट नहीं होता था है ना. तो उस टाइम क्योंकि था तो ही ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी है ना. तो फिर आखिर में आप एक क्वेश्चन दे सकते हैं कि भैया आप इसका सॉर्ट करो है ना. तो वो बाद का बात. पर अभी तो उसको आप केस को फ्रेम करोगे ना. अभी आप फर्स्ट यू विल हैव टू फ्रेम द केस, but then it is taking the shape of a the journey of an entrepreneur which you can discuss. Okay. फिर बाद में आप क्वेश्चन में दे दीजिए. वो क्वेश्चन बन सकता है कि भैया इसका सॉर्ट करो, स्ट्रेंथ्स क्या थी, वीकनेस, एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट कैसा था, वो कंड्यूसिव था कि he grabbed the opportunity because that environment was conducive at that time for the particular thing. But then एक स्टेप उठाना, that's a strength जो उसने from time to time किया है ना. Ma'am, I want to say something. Can allow? हाँ बताइए. Presently now he landed as a social media influencer in food and blogging industry. So he landed to a very demanding profession now. So finally, this is the reason actually I wanted to go for a case study with this. अभी बहुत सारी इंदौर में, चूंकि इंदौर is a food loving city, तो whenever a new industry into food beverages come, they hire these kind of people who influence the right kind of target market, and they charge heavily for it. See, money is one part. Money is one part, but the another part, money is important part, but then capability of taking up the challenge. तो वो उस पर आप उसको हाईलाइट कर सकते. May I speak? Amal sir, mute कर दीजिए please. Ma'am, actually he seems opportunistic. Like everywhere he grabbed that opportunity. Somewhere he is close to that. अपॉर्चुनिटीज तो है, वो तो है. एंटरप्रेन्योर जो होता है वो तो पहले अपॉर्चुनिटी ही देखता है और तब उसको टैप करता है ना. तो उसका तो जो आगे जब आप कर रहे हो ना कि what you are just saying that it's a journey of an entrepreneur. तो एक खासियत तो एंटरप्रेन्योर की यही होती है ना कि he grabs the opportunity. Yes. So when you say one is an opportunist, that goes a negative. Opportunist बोलना that's a negative. That is a negative. है ना. तो उसको अगर हम उसको he is grabbing the opportunity, that is a different. तब तो उसको पॉजिटिव में ले सकते हैं. पर if he call him an opportunist, then it goes a negative way.
मतलब उसका वर्ड का कैनोटेशन ऐसा है। ठीक है, अब आप करें तो कल फिर मतलब जो नेक्स्ट अपना प्रेजेंटेशन होगा उसमें देखेंगे हाउ द थिंग्स मूव ऑन, बट एज सच आई थिंक देयर शुड बी अ गुड केस, वन कैन मेक आउट अ गुड केस आउट ऑफ इट, where you can just see the journey of the entrepreneur, how one started and how he moved, and but at what stages, what were the different challenges he faced, and but then overcoming those challenges he moved on. क्योंकि आपको एवरी स्टेज पर आपको कुछ चैलेंज बताना पड़ेगा आपको ना, क्या उसको क्या चैलेंज आया वहां पर। ऐसा नहीं कि उसको दिल किया एक अर्ली मॉर्निंग उठ के कि चलो भाई मैं 4 चटोरे करूंगा, भाई उसमें तो उसका मेहनत भी लगी होगी, उसमें इनिशियली क्या चैलेंजेस थे, हु वेर इन द मार्केट, हु वेर द मार्केट प्लेयर्स दैट टाइम, हाउ डिड ही, और दैट you will have to mention, then it will become a very good case, where at every stage and in that shift where the challenges he had to face. It's not, it would not be a very क्या बोलते हैं ना, very small walk in the sense that आज उसको इच्छा हुई तो उसने किया और वो उसके हाथ में आ गया. At every stage he must have faced certain challenges, and how did he try to overcome some challenges may be still there, but he has tried to overcome and move on. तो उसके पर आप उसको फोकस कर सकते हैं. ठीक है. Chale ji, we have now the another group is Shivang Dwivedi. Shivang? Yes. Yes, ma'am. आपके ग्रुप में है विनोद कुमार मिश्रा. जी. He was yesterday there. Pawan Kumar Mittal, he was Ma'am, there. yes. Yesterday only Snehalata ma'am and Vinod Mishra sir were there. So Pawan Kumar Mittal was not there. So again, we are putting cross because he was not there. So therefore, Manish, you have to keep it in mind. जी मैम. कौन कौन लोग नहीं थे तो उनको डिलीट करना, उनको कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलेगी. जी मैम. Good afternoon, ma'am. I am there, ma'am. Snehalata ma'am थे. Snehalata ma'am और मिश्रा sir. Yes. Only Pawan Kumar Mittal was not there, है ना? मैम समीर दुबे सर भी कल नहीं थे, कल के सेशन में नहीं ज्वाइन कर पाए थे कुछ रीजन से. समीर दुबे कल कुछ रीजंस की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए थे. नहीं, पर फिर तो कोई मतलब नहीं हुआ ना केस राइटिंग वर्कशॉप का. समीर दुबे yesterday he was not there, so he doesn't know anything what happened yesterday, so how he can proceed. उनको कैसे पता लगेगा कि कल हमने क्या जो केस राइटिंग वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव है, हाउ डू वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, हाउ डू वी फ्रेम द इंफॉर्मेशन, कैसे करेंगे, वो तो कल जब थे ही नहीं तो फिर तो मतलब ही नहीं है ना आज होने का मत, बिकॉज ही is not aware about what happened yesterday. Anyway, Shivang Dwivedi, please start. आपने कहा आप कहाँ गए थे, क्या आपने किया? कल मैम जो है yesterday we met corporate Mr. Dr. Nandankar from Axion Technologies. This company is a US based company situated in Pittsburgh, USA, having a strength of 5,000 employees, and this company is a IT service provider company. The company develops different types of softwares and provide to different types of clients. They have around 150 projects going on right now, and they have some reputed clients also like Visa, that card company. So he told me different things, but the main challenge was regarding the talent acquisition. Means if a person leaves the firm between a project, so hiring a person is very tidy, as he told me. Means if he hires a person and the person asks for some certain amount of package, the company provides that package, but he also have to serve the notice period in other company where he is serving. तो जो जिस कंपनी में सर्व कर रहे होते हैं नोटिस पीरियड, तो उनका ये कहना था सर का कि गारंटी नहीं है कि वो वहां से नोटिस पीरियड सर्व करके दोबारा यहाँ पे ज्वाइन इनके फर्म में करेंगे. उन्होंने एक टर्म बताया, दैट टर्म वाज ऑफर शॉपिंग. ऑफर शॉपिंग मींस इफ ही इज हैविंग अ सैलरी पैकेज ऑफ फॉर एग्जांपल 10 lakhs फ्रॉम एक्सियन टेक्नोलॉजीज, अगर वो वही पैकेज लेके अदर फर्म्स में भी उस ड्यूरेशन में इंटरव्यूज देते हैं, वहां पे अगर उनको ज्यादा पैकेज मिलता है, तो फिर ये इस टाइप में एम्प्लॉइज क्या करते हैं, फिर एक्सियन टेक्नोलॉजीज के पास आएंगे, बोलेंगे मुझे यहाँ पे इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ पैकेज मिल रहा है,
तो ये जो उन्होंने टर्म बताया ऑफर शॉपिंग, एक ये उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है, तो फिर वो इनसे ज्यादा पैकेज का ऑफर मांगते हैं। सेकंडली इन्होंने ये बताया कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है फर्म छोड़ के चला गया है, तो जो जो पीपल रहते हैं बेंच पे, उनको फिर ये लोग जो बेंच पे रहते हैं, मतलब जो वर्किंग उस टाइम नहीं रहते हैं, जो एक्स्ट्रा इनके पास वर्क फोर्स है, उसको फिर ये लोग उस प्रोजेक्ट में करवाते हैं। वहां पे प्रॉब्लम से आती है कि हो सकता है वो जो एम्प्लॉय बेंच पे है वो उतना स्किल्ड ना हो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। ये एक उन्होंने प्रॉब्लम बताई। और जो मेन इशू था, जैसे इनके जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स पे करते हैं पूरे प्रोजेक्ट के लिए, बट अगर कोई एक पर्सन बीच में से छोड़ के चला जाता है, फिर जो एक्स्ट्रा जो जो बेंच पे जो बैठा हुआ एम्प्लॉय है, वो जब यहाँ पे आता है दोबारा ज्वाइन करता है इनका प्रोजेक्ट में, तो वो जो कॉस्ट है वो कंपनी बियर करेगी, ना कि वो कॉस्ट क्लाइंट बियर करने वाला है। तो यहाँ पे इनको कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है, कि ये प्रॉब्लम। ये सारी मैम प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई। और उन्होंने बताया कि अभी करंटली आईटी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के उस पर डिमांड बहुत ज्यादा है करंटली, बट सप्लाई जो है उतनी नहीं हो पा रही है। वर्क फोर्स जो स्किल्ड वर्क फोर्स है वो उतनी नहीं है। So ये that सारे is the challenge for them. जी That is the challenge for them. जी जी जी, that is the challenge for them, and also finding the right person and at right time is also a challenge for them, for the company. Right person at the right time. राइट टाइम, बिकॉज वो प्रोजेक्ट तो बीच में चलता रहता है, एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, तो जो बेंच पे जो पर्सन है उससे करवाते हैं, बट वो उन्होंने बताया कि उतना स्किल्ड नहीं रहते हैं, क्योंकि वो फ्रेशर्स रहते इसमें हैं। दो चीजें है ना, एक तो वो स्किल्ड नहीं है, दूसरा यू हैव टू पे, हाँ, यू कंपनी हैज टू यू बियर द हैव टू पे कॉस्ट। बिकॉज क्लाइंट हाँ विल नॉट, क्लाइंट ने हाँ 20 पीपल के लिए दिया, आपका अगर दो बीच में छोड़ के चला गया तो यू हैव टू बेयर दैट कॉस्ट। यस मैम। आपने इसका बैकग्राउंड वगैरह ले लिया है कि मतलब व्हेन डिड द कंपनी स्टार्ट एंड? हाँ, इट इज एन 11 year old company, started in 2011, and all the board of directors are of Indian origin. but they are settled there in US. Settled in US. You settled in US. Yes ma'am. So but then they are all settled in US, but they are operating in India. Operating. It is a multinational company. They have offices in India, in Pune, Bangalore, Hyderabad, and also in other countries. उनका फ्यूचर विजन वगैरह के बारे में उन्होंने बताया। फ्यूचर विजन मैम उनका है कि टू डिलीवर द टेक्नो टू डिलीवर सम, उनका मैम विजन मिशन में बता देता हूँ, इम्पैक्टिंग लाइव्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस थ्रू इनोवेशन। ये उनका विजन मिशन स्टेटमेंट था, और उन्होंने बताया इट इज अ वेरी पीपल ओरिएंटेड कंपनी, एंड उनका जो एम है वो यही है कि क्वालिटी डिलीवर करना टू द क्लाइंट्स। कुछ उन्होंने बताया, जैसे उन्होंने बताया कि हमको इतने स्किल वर्कफोर्स नहीं मिलता, जो बेंच पर रहते हैं तो वो स्किल्ड नहीं रहते थे, तो बेंच पे जो वर्क रहते हैं, तो उसमें कुछ उन्होंने बताया कि दे हाउ डू दे ओरिएंट देम, या हाउ डू दे गो अबाउट ट्रेनिंग देम सो दैट उनके जो स्किल बेस है वो थोड़ा, उसके बारे में कुछ जिक्र ट्रेनिंग हुआ। एंड डेवलपमेंट बताया उन्होंने, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम उनके यहाँ पे दिए जाते हैं फ्रेशर्स। एक्चुअली वो कंपनी जो है फ्रेशर्स को हायर नहीं करते हैं, बहुत ही लीस्ट अमाउंट में फ्रेशर्स को हायर करते हैं, उन्होंने मुझे बताया था। तो क्योंकि फ्रेशर्स को हायर नहीं करते हैं, जो पहले से ही ट्रेंड पीपल है वही उनके यहाँ मेजोरिटी में जो है उन्हीं की नंबर है उनके यहाँ, तो फ्रेशर्स बहुत ही लीस्ट अमाउंट में हायर करते हैं, तो फ्रेशर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। बट बोले कि जो उनके अब जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो प्रोजेक्ट्स जो हैं फॉर ए फ्रेशर नहीं रहते हैं, वो एक हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज के लिए ही वो प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो फ्रेशर्स को ऐसे बीच बीच में से धीरे धीरे सिखाते हैं, वो एकदम डायरेक्टली किसी प्रोजेक्ट में डायरेक्टली उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है जी। So now the case will be on, I think, talent acquisition, no? Challenges, है ना? Challenges of talent acquisition. Yes ma'am. All right. अब I think now we can go to the first group and then the last group. Yes, Manish. We had Jyoti. शिवली है? नहीं, शिवली नहीं है। मनीष, Yes, ma'am. हाँ जी, अब आपका ग्रुप आ जाए। जी मैम। Jyoti is there? I could see Jyoti on the screen.
ठीक है मैम, तो मैं थोड़ा सा Yes, मैं yes, इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आपके ग्रुप में क्या है? एक तो डॉक्टर धर हैं, फिर आप हैं, फिर ज्योति है और शिवली दिगे। शिवली मैम, शिवली कल वो session थी क्या yesterday, कल? हाँ हाँ थी मैम, अभी हाँ, कई असाइनमेंट के लिए कहीं गई है। चलिए बताएं। Good morning, everyone. Good day, everyone. We had a very good experience sharing session actually yesterday with Honorable Vice Chancellor, sir. And since he's having such a vast experience, he was sharing one incident of Prashanti University, Vadodara, Gujarat. Now, what went all the changes in that particular university was sir was sharing experience about two departments. One was physics department and another was chemistry department. In physics department, there was Professor Abhishek Singh, who was working in that department since long, and he has not completed his PhD qualification. But the top management has offered him the post of professor. And if you check the minimum requirement of professor, which has not been taken care of by the promoters of that particular university. And when Dr. Sanatan Das, who was Vice Chancellor first time to that university, joined, and he was evaluating the his faculty members, and he could able to find out that the gentleman who is serving as a professor is not having formal qualifications as far as the UGC and AICTE norm. So what he has done is he informed Professor Abhishek that you have to pursue your PhD and better you enroll for PhD program. We are not going to ask you to leave the university, but we wish if you can pursue and register your PhD program. During this time, the admission of physics department is also not doing well. And there was a parallel department nearby to that was chemistry department, who wanted actually one room they wanted to get from, wish to get from physics department, because they wanted to open another lab for the upcoming students, as the students' strength is more in chemistry department, and they wanted to have another infrastructure for them since university is not having enough one. So he approached physics department professor for the room which they were not having, not being utilized actually. That is the reason they asked, but he did not support it, chemistry department. So the chemistry department, head of the department, approached the vice chancellor and requested for this. In the meantime, Professor Abhishek registered for PhD program, and he wanted to pursue PhD program. But at the same time, after 6 months, he was given opportunity to work under his junior, who was the research guide. So this is the point which sir was sharing. If you are not formally qualified, then you wish to go for your PhD program, then maybe you are supposed to work under your junior. You have to complete your academic qualification. So that was not very comfortable to Professor Abhishek. So after 6 months, he has stopped coming up with the assignments or going for the regular classes, and the coursework he dropped, and somewhere he did not pursue his PhD program. After some time, then Vice Chancellor Dr. Sanatan Das asked him that you have to complete your PhD program or we may be liable to take some action against you. Still that after 6 months, he approached Vice Chancellor and said that he want to resign from that particular department.
He didn't want to pursue further. And in the meantime, chemistry department took that room. So a committee was made by Vice Chancellor sir, and committee recommended that the room of physics department must be given to chemistry department because the students are more in number and they are growing very, very fast, and they require laboratory, which is a very essential element of a chemistry department. So that room has been given to chemistry department, but that gentleman did not even support it to share the infrastructure. So he was actually forced by the committee to give his room to chemistry department, and the chemistry department after that took the lab, and their lab is doing well. Their admission cycle is also doing well. In the meantime, physics department could not able to get more numbers of students. So every year their admission is going down because the head of the department is not formally qualified and he's not putting his efforts also. During this period, almost 3 years were over now. So the university, the vice chancellor, the top management actually give an opportunity to Professor Abhishek to pursue his qualification, become a leader, share leadership by example. But after giving so many opportunities, Professor Abhishek did not took it in a positive way. Because of one reason is he was having age of 54 years. So he said, since I am approaching towards my retirement, that is the reason I didn't want to go for a formal qualification, and again didn't want to study at this age, especially with a research guide who was considered as junior to him. And after 3 years of time, Vice Chancellor has given office note which says you are requested to appear for an interview where you will be interaction where you will be asked to submit your premature premature retirement application. So after 3 years, he was asked to leave formally, and then he left the organization, the university. So that was a very interesting personal experience shared by Honorable Vice Chancellor sir yesterday. My team members were Shivali and Jyoti. Jyoti, you can add something if possible. All right. Up we have the last group, that is our group, where we have Padma and Tripti. Yogesh was not yesterday. He just came and went, but then he has not been there. So Tripti and Padma can share what we have received yesterday, the information. Yes, ma'am. I think Good Trapti morning, madam everyone. can start. Yes, yes. So yesterday we have discussed regarding the MSMEs loan providing and funding opportunities, which has provided by the lending card. That is top 8 fintech companies among provided the platform. For longer period of time, the MSMEs has remained capital starved, unlike large business and corporations. In that way, India has put forth the 5 trillion economy vision. On that basis, the founder and the co-founder Harshvardhan Lunia and the major stakeholder with Mukul Sachin started in 2014 with the lending card, and the MSMEs focus lending platform that had created, by which they can provide short-term working capital and SMEs borrowers by its NBFC's arms lending card finance limited. Funding hubs provides credit and finance almost to tier cities and almost to all the areas which are highly reachable all over the country, and they provide credit up to 1 crore to an average loan limit of 6 to 7 lakhs through its cash flow underwriting model, that is Cred Edge. And the technology driven fintech startup has a strong talent acquisition team which takes care of hiring from M1 to M14 level.
by which they do strong hiring and find the talented peoples. And they have also raised around 1050 CRs in equity fundings from international investors like Fullerton Financial Holdings, Mayfield India, Sama Capital, Systema Asia, and India Cotent, and others. The company has meticulously designed a few of the systems for its interview process and how do they exit interviews and rest of the HR policies. Over to you, Padma ma'am. Yes, thank you, Trapti. So basically, overall, we got the information from Mr. Piyush about the entire talent acquisition department, how they work in the company, what are the challenges they face, and what are they doing to, you know, give the best practices within their organization by providing best of the leave policies that includes the fresh leave, mental health leave, and these to name a few. Also, they support the candidates case-to-case basis. So they also shared with us that they have a town hall system wherein the CEO interacts with employees and they have an open discussion and they sort out the problems then and there itself, and the solutions are provided within 24 to 48 hours. So basically, we have started drafting the case specifically in the talent acquisition area, and that's all. So if anything else. So what about, there was some more information regarding how do they interact with their employees, how many divisions are there? And there are 34 divisions. Yes. Yeah, that we need to add in the draft. Yeah, that we need. And then again, they were talking about, they talked about, then what is their, hiring level 1 to 12? Yes, that Trapti said. That I have mentioned M1. Yes. And then there was AOP, he said, fresh replacement, how would they, anyway, that we'll mention while drafting. Yes, yes. So training part also they mentioned that how do they train as per the need analysis or the self-appraisal basis. Or right. Voluntarily if any employee want to go for some training. All right. I think we have all the 5 groups have enough information so that the cases can be drafted, good cases. I'm sorry. Hello, yes. Ma'am. Sorry to interrupt you, ma'am. I am the member of group 4, ma'am. And my name is Nilata Jaiswal. Please, if you don't mind, I want to share my opinion from first session to second session because I have attended all the session, ma'am. If you give me one chance to express my opinion. See, यहाँ पर opinion तो नहीं चलता है, यहाँ पर है कि आप you have to share some information which has been missed by your group members. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, if I am going to start from the first session, which is taken by sir, मैम सर ने बहुत अच्छी बातें बताई जिसमें उन्होंने व्हाट इज केस के बारे में बताया और देन सर ने 4 Ds के बारे में बताया कि 4 Ds में 4 Ds का मतलब क्या है. तो व्हाट इज केस इज स्नेहलता जस्ट अ मिनट. नहीं, मैं एक्चुअली मुझे लगा कि नहीं, हम यहाँ हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं, हम फीडबैक नहीं दे रहे, हम खाली ये देख रहे थे कि किसके पास कितना इंफॉर्मेशन है, अगर कहीं गैप है तो सो दैट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड द ग्रुप मेंबर्स वुड एड्रेस टू दैट. अभी जो अभी अपन ने सब ने शेयर किया उसमें ये लगा कि एवरीबडी हैज अनफ इंफॉर्मेशन, हर कोई उस पे केस अच्छे से डेवलप कर सकता है. तो अभी जो हमारा स्टेज है वो है केस डेवलपमेंट. नाउ विल ऑल ऑफ अस विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द केस डेवलपमेंट, ड्राफ्टिंग ऑफ द केस, बिकॉज एज सच इंफॉर्मेशन तो बहुत है हम लोगों के पास, लेकिन उसको सिस्टमैटिकली किसके बाद क्या आएगा सो दैट देयर इज अ फ्लो. I want to speak some points. This company एक्चुअली आप ऐसा करें, जो आपका ग्रुप मेंबर्स है ना, तो आप जिस ग्रुप में हैं आप अपना क्योंकि अभी तो आप ग्रुप में सब लोग काम करेंगे,
तो ग्रुप में अगर कोई इंफॉर्मेशन छूट जाता है तो वो आप वहां पर कहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो आप ग्रुप मेंबर्स के कॉन्सोनेंस में लेके आप कर लीजिए, ठीक है। अभी तो फीडबैक का टाइम नहीं आया है जहां आपको फीडबैक देना, पहला और सेकंड सेशन, अभी वो टाइम नहीं आया है। अभी खाली हमको कॉन्सेंट्रेट करना है ड्राफ्टिंग ऑफ द केस। सो ऑल ऑफ अस विल गो इन इंडिविजुअल ग्रुप्स and draft the case. So by evening we should be able to give it a proper shape, proper format, so that क्योंकि उसमें क्या पहले लिखेंगे फिर पढ़ेंगे तो उसमें ड्राफ्टिंग एंड रीड्राफ्टिंग में बहुत सारी चेंज। सो वी राइट नाउ वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, ठीक है। यू आर इन विच ग्रुप? यू आर इन शिवांग द्विवेदीज ग्रुप। सो आपके पास तो बहुत सारा मसाला है। I think out of all your group has got the maximum masala, so you can frame it well. ठीक है? All right. Yes, ma'am. All right. So I think we leave it here and we can move on to the individual group. मैम आई हैव वन पॉइंट मैडम प्लीज। हाँ जी, बताइए। ये जैसे आपने कहा ना ड्राफ्टिंग में, सो ड्राफ्टिंग में जैसे राइट अप ही लिखना है कि भाई जैसे स्टोरी, मतलब जैसे एक जो राइट अप इन द सेंस कि हाँ, जैसे आपके केस में दिस इज, जैसे आप बोलेंगे सपोज दिस इज अबाउट द पवन, है ना। सो पवन सो एंड सो ही पास्ड इन दिस एंड दिस ईयर, उसकी कहानी पूरी। फिर जहां पर आपको फिर उसने देन ही थॉट ऑफ दैट ही शुड, व्हेन ही वाज टोल्ड अबाउट दैट यू हैव गॉट वेरी गुड मार्केटिंग स्किल्स, सो इट बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस and then he joined a marketing company. I'm just giving an example. Company, and there what were his challenges? Initially he thought that perhaps it was not a right choice, but then he thought it that I should make it, and then he just moved ahead. तो ऐसे करके आपको एक तरफ से कहानी ही लिखनी है। ओके वही समझने के लिए। हाँ, कहानी ही लिखनी है, डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है और chronologically लिखना है, in the sense unless it is necessary that you are just पहले आप अभी कर रहे हो फिर पास्ट में जा रहे हो। कभी कभी केसेस वैसे भी होते हैं ना कि शुरू में जो अभी उनके पास प्रॉब्लम है लेकिन पास्ट में क्या था उनका, वैसे भी हो सकता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द, एक्चुअली all of us have enough information, but then how well we present it, it is through our drafting. Okay, है ना। तो one more thing. हाँ जी, बताइए। It is just it will be descriptive format, or we can involve our points here, our views also. One thing you have to keep it in mind while we are writing a case, we don't have to give our judgment. Okay. है ना। अगर आपने जजमेंट दिया, जो केस फिर बाद में डिस्कस करेगा तो उसका बायस्ड हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ही वॉज अ हार्ड वर्कर, सपोज मिस्टर जायसवाल वॉज अ हार्ड वर्कर, इफ आई जस्ट से अबाउट योर केस ना, जब मैंने उसको हार्ड वर्कर बोला तो जो पढ़ने वाला होगा उसका दिमाग तो बायस्ड हो जाएगा ना। ही शुड कम आउट, आप उसकी सीक्वेंस जो उसके काम उसके दिखाओगे, ही शुड बी एबल टू से वेल he is a hard worker. अगर आपने उसको कोई भी एडजेक्टिव दिया, उससे जो पढ़ने वाला होता वो बायस्ड हो जाता। तो you have to be non-judgmental, you have to just give the facts. अब जैसे आपने अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, किसको बता रही थी मैं, कि भैया इट्स अ जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, पवन को बता रही थी, इट्स एन जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ही टुक इट एज अ चैलेंज। नाउ अगर मैं यहाँ पर कहीं भी मैंने कोई एडजेक्टिव यूज किया विच वॉज वेरी गुड ऑन हिज पार्ट एज एन एंटरप्रेन्योर, तो उससे जजमेंटल हो जाता आदमी। तो जो डिस्कसेंट होंगे लेटर, दे गेट बायस्ड। सो यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट द फैक्ट। उसने आपको बोला कि भाई मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया और फिर मैंने इसको ऐसे ऐसे किया, तो आप बताओगे कि भाई उसने ये किया। तो उसमें इनफैक्ट अगर हम ये बताएंगे ना, ही टुक इट एज ए चैलेंज, राइट। He said there, if we say that he took it as a challenge, it goes in his favor, है ना। अगर I say कि many challenges were there, then you are discussing about the जो उसने देखा। पर जब you say he took it as a challenge and thought that I should do it, then it becomes judgmental. Do you understand? मैं sentence वही है, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है, फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंटली करना उसको। मतलब अगर आप बोलोगे देयर व्हेन ही एंटर्ड द टीचिंग देयर वर मेनी चैलेंजेस व्हिच ही सॉ, है ना, देयर वर मेनी चैलेंजेस,
अगर आप ये बोलोगे but then अगर आपने ये बोला he thought that I should overcome these challenges, then you became a judgment. तो वो सामने वाला क्या लगेगा, अच्छा आगे जो वीकनेस भी है उसको वो वीकनेस दिखेगी नहीं, वो बस वही लेके बायस हो जाएगा. So therefore don't use any adjectives, just simply write the facts without giving, अब वो सही था या गलत था आप मत बोलिए. वो जैसे आप बोले ना कि सजेशन, आपको कोई सजेशन नहीं देंगे. अगर आपने सजेशन दिया तो बायस हो गया बंदा. तो नो सजेशन, simply the facts. Case is simply the facts, what has happened, whether it was right or whether it was wrong or what you think, that don't say anything in the case. Thank you. ठीक है जी. Now we can move to our individual groups and start writing. Surely. ठीक है जी. जी. चलिए. Thank you very much, ma'am. Now where we are, Trapti, are we going to yesterday's link? Yes. कल वाले लिंक पे जाएंगे अपन क्या? I'll share you the new link. Okay. Okay. तो अभी से I'll mail it. I'll mail it, ma'am. Okay, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Trapti. Everyone, bye. Thank you. All the participants, please connect in your team and start drafting it. Thank you.